और इसे हल्का सा सॉटे करना है मीडियम टू लो फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप इसमें जस्ट थोड़ा सा घी डाल दीजिए, देसी घी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है अच्छा होगा और बच्चे के लिए भी हेल्दी है ये। और यहाँ पे हम चाट मसाला और जीरा का पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा चटपटा जो फ्लेवर आता है वो मुंह में भी बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे कि बुखार, ठंडा, खांसी, ये सब होने से ना आपका टेस्ट बड भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए आप ये बिल्कुल ट्राई करें। और मेरी बेटी तो मतलब दिन भर ऐसे कुछ भी नहीं खाने का मन करता है, तो मैं इसे दिन भर में 2-3 बॉल सर्विंग देती हूँ और ये बिल्कुल ही परफेक्टली फाइन है। आप आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये क्विक 2 रेसिपी, हेल्दी रेसिपी? जब आपका कुछ मन ना करे बनाने के लिए, या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बिल्कुल ट्राई करें। और ये झटपट बन जाती है मिनिमम इंग्रेडिएंट्स से। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।